Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we'll discuss certain other aspect which is actually related to your professional ethics. First is copyright, then plagiarism and intellectual property rights. We will be discussing these terms one by one in the next slides. First of all, we will be discussing copyright. Actually, copyright is the special rights which are being given to the people who have created certain artistic work or certain work of art or certain other things. So in this way, they have a right to create their own word or display their own work. So in Pakistan, this copyright law is governed by and Copyright Ordinance 1962, and it is actually amended by Copyright Amendment Ordinance 2000. So this law actually give author and artist the exclusive right to make and sell copies of their work, and also they can create their work, distribute their work, and display their work publicly. And a violation of copyright violation occurs when there is an infringement upon the legal right of the copyright holder. Like if there is a copyright holder and some other person create that work, or some other person have distributed their work without their permission, so that is called as violation of copyright. And if something has been copyright, you have to obtain permission from the copyright holder to use it. So if that permission has not been taken, so that would be called as copyright violation. And because you have to pay the money to the copyright holder, therefore it's very important that you could get permission and pay the specific amount they have charged for using their copyright. So a person who has committed the copyright infringement has violated a federal statute and can be subject to criminal and civil penalties. अब यहाँ पे देखिए कॉपीराइट की जब हम बात करें ना, तो कॉपीराइट का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा कोई रिटन वर्क करता है या कोई आर्ट्स का वर्क करता है या कुछ क्रिएट करता है, तो उस चीज़ के ऊपर वो एक कॉपीराइट ले लेता है और उसके गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर देती है कि उसके अलावा ये कोई और नहीं बना सकता, और अगर कोई बनाएगा तो वो उससे प्रॉपर परमिशन लेगा. सो अगर तो पाकिस्तान में जो है वो 1962 को ऑर्डिनेंस के थ्रू, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस के थ्रू ये लॉ जो है वो लागू किया गया था, लेकिन इसके बीच में 2000 में जो है वो अमेंडमेंट की है, मतलब चेंजेस किए हैं, जिसको अब हम कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 2000 कहते हैं. इसके अलावा अगर तो आप ये कॉपीराइट वायलेशन करते हैं और आप किसी का वर्क उसको बताए बगैर और उसको कॉपीराइट की पेमेंट के बगैर करते हैं, तो आपने एक जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी की है, और फिर इसके उसमें जो है आपको सज़ा भी हो सकती है. वो सिविल कोर्ट्स में भी हो सकती है सज़ा, या क्रिमिनल कोर्ट, जो भी वो चाहें उसके बीच में आपको सज़ा होगी, और आपको उसके मुताबिक जो है ना वो या तो पेमेंट करनी है, या तो वट एवर जो आपको पर उन्होंने यहाँ पे लॉ में सजेस्ट किया है वो चीज़ आपको करनी होगी. Now another important aspect is plagiarism. As you are the students of university and you are about to write your proposals and your thesis, so it's very important that you should know that ethically plagiarism is not acceptable, and obviously it's not acceptable at the academic level. As we have seen that there is no certain rules or laws which is being given by the government in order to avoid plagiarism, but the rules have been established in the academic setting and it's actually being done due to the importance of crediting the other person's work. And the person who is committed of plagiarism is not being charged or prosecuted by the government for plagiarism, but they could be fined or go to jail for plagiarism. So when there is a charge of plagiarism, it has a severe consequences. It can result in the expulsion of the person from the university, or they can lose their job, or obviously it can also due to the reason that they haven't mentioned the writer's source, or they haven't mentioned the another person works which from which it has taken certain important information.
Then actually plagiarism is defined as taking the original work of other and presenting it as your own, as you are taken certain things or certain important points from other person's work, and now and you haven't cited that source from which you have taken it. So when you use the work of someone else, you must acknowledge the author or creator of the original work inside the source where you found it. Like यहाँ पे जो बात हो रही है ना, कि वो इम्पोर्टेंट ये हो रही है कि आपका जो प्लेजरिज्म है ना, वो एक्चुअली इसका आप ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट ने कोई रूल सेट किए हुए हैं, लेकिन एकेडमिक सेटिंग में सर्टेन रूल्स वगैरह बने हुए हैं जिसमें आपको ये इंश्योर करना है कि अगर अगर आप कोई काम कर रहे हो या लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आपने जिस बंदे से वो काम लिया हुआ है, जिस बंदे का काम आपने अपने उसमें डाला है राइटिंग्स में, सो उसको जो है ना वो आपने प्रॉपर तरीके से क्रेडिट करना है। आपने बताना है कि जी ये चीज़ें मैंने यहाँ यहाँ से ली हैं और इसका सोर्स ये है। उससे फिर ये होता है कि आपका प्लेजरिज्म का चार्ज आप पे नहीं आता, क्योंकि जब प्लेजरिज्म का चार्ज किसी पे लग जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो सज़ा मिले, लेकिन वो उसको फाइन भी हो सकता है या उसको जेल भी हो सकती है। प्लस आपका ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाए अगर आप प्लेजरिज्म में कमिट कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप जो है ना वो यूनिवर्सिटी में है तो अगर आपको वहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि आपने जो राइटर है उसको उससे उसका काम है उसको क्रेडिट नहीं दिया, और उसको जो है ना उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोफेशनल लाइफ में। इसके अलावा हम कहते हैं कि जी प्लेजरिज्म जो है ना वो ये है कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो आप क्या करेंगे, किसी और के ओरिजिनल वर्क को अपने ओरिजिनल वर्क के तौर पे पेश करें। सो ये एक चीज़ जो है वो एक अनएथिकल है। अगर ये करते हो तो आपको जो है ना वो फिर फाइन भी हो सकता है, सजा भी हो सकती है, वट एवर जो है होता है। तो इस चीज़ में आपने ध्यान रखना है कि आप कहीं भी प्लेजरिज्म कमिट ना करें। As it's very important that if you have only paraphrased the words of another or summarized the source, you must acknowledge the source it came from. Anything that is seen as unethical and unattributed use of another's original creation can be defined as plagiarism. Like अगर आप कहते हैं कि जी आपने अगर किसी को और के काम को लिया है और उसको पैराफ्रेज किया है, दोबारा अपने वर्ड्स में लिखा है, तो भी ज़रूरी है कि आप उस सोर्स को साइट करें और आप बताएं कि जी मैंने इस सोर्स से जो है ना ये तमाम चीज़ें जो है ली हैं। क्योंकि आप ये अनएथिकल होता है कि जी आप जो है वो किसी के ओरिजिनल वर्क से आप काम ले रहे हो और जो है उसको अपने तौर पे पेश कर रहे हो। तो अगर आप इस तरह करते हो तो आप इस चीज़ को हम प्लेजरिज्म कहते हैं। Now, another important question is that can you commit copyright infringement and plagiarism at the same time? So there are certain consequences. First of all, a person can commit plagiarism and copyright violation with the same action. That happens when a person uses something without getting the necessary permission and does not cite the source it came from. Like इसमें कहते हैं कि जी आप कॉपीराइट और प्लेजरिज्म दोनों एक साथ कमिट कर सकते हैं। तो जी वो कहते हैं कि जी ये हो सकता है कि जब आप किसी का काम आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं और आपने उनसे परमिशन भी नहीं ली और उसको आपने साइट भी नहीं किया, तो इस केस में आपने कॉपीराइट वायलेशन भी की है और आपने प्लेजरिज्म भी किया है। Yes, an action may be copyright violation but not plagiarism. That happens when a person properly cites a source but does not have the legal right to use the source material. अब सेकंड में आप देख लें वो ये कह रहे हैं कि आपने अगर तो मतलब ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आप कॉपीराइट जो है वायलेशन तो करे लेकिन प्लेजरिज्म नहीं करे। उसके केस में ये है कि आपने किसी का काम यूज़ किया है, उसको साइट भी किया है, लेकिन आपने उस बंदे से नेसेसरी परमिशन नहीं ली कि मैं इसको यूज़ कर लूँ या ना करूँ। So an action can be plagiarism but not copyright violation. That happens where the person uses material that is not protected by copyright but does not properly cite the source of the material. अब सेकंड केस ये है कि आप जो है वो कॉपीराइट वायलेशन तो नहीं करे लेकिन प्लेजरिज्म करे हो। वो केस है जब आप किसी का काम यूज करो जिस पर उसने कॉपीराइट नहीं लिया हुआ, तो ऑब्वियसली उसमें कॉपीराइट वायलेशन नहीं होगी, लेकिन आपने उसको साइट भी नहीं किया, तो उस केस में फिर आपका प्लेजरिज्म जो है वो आप कमिट करे हो। So, because plagiarism is a violation of academic rule, copyright is a violation involves the statute. इसका मतलब ये कि plagiarism जो है ना वो आपका जो academically जो रूल सेट हुए हुए हैं, जो लॉज बने हुए हैं, जो गाइडलाइंस बनी हुई है, उसकी जो है वायलेशन होती है। लेकिन जो आपका कॉपीराइट होता है वो प्रॉपर एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जिससे रूल्स वगैरह बनाए हुए होते हैं, उसकी वायलेशन होती है। So plagiarism is an offense against the author.
copyright is an offense against the person who owns the copyright. मतलब जो प्लेजरिज्म का जो ऑफेंस होता है, जो होता है वो ये होता है कि वो उसने ऑथर को नुकसान पहुंचाया और उसके अगेंस्ट जो है ना वो कमिट किया है प्लेजरिज्म को। लेकिन जो कॉपीराइट होता है ना वो उसका ऑफेंस होता है जिसने कॉपीराइट जो है वो लिया हुआ है, उसके कॉपीराइट खरीदा हुआ है या आपने उसके ऊपर परचेज किया, तो उसके अगेंस्ट होता है। सो प्लेजरिज्म इज अबाउट द फेलियर टू प्रॉपरली एक्नॉलेज द ऑथर ऑफ अ सोर्स that you used, and copyright violation is about the failure to pay the copyright holder for the use of the material or the failure to obtain possession. Like I have said before कि हम प्लेजरिज्म की जब बात करते हैं तो प्लेजरिज्म जो है ना उसकी वही वॉयलेशन ये है कि वो मतलब उसका जो कहते हैं ना प्लेजरिज्म आपने किया है, तो उसका जो वो ये है कि आपने किसी और के काम को इस्तेमाल किया है, यूज किया है और उसको प्रॉपरली साइट नहीं किया। लेकिन जो कॉपीराइट है वो कॉपीराइट वायलेशन उस वक्त होती है जब आप किसी को किसी का मटेरियल या कोई काम यूज कर रहे हैं उसकी परमिशन के बगैर और आपने उसको पेमेंट भी नहीं की उसके कॉपीराइट की। सो जो कॉपीराइट होल्डर है उसको पेमेंट के बगैर आपने उसको परमिशन के बगैर आपने उसका काम यूज किया, तो ये इस चीज में डिफरेंस है। प्लेजरिज्म कैन बी अवॉइडेड बाय citing the source that you use. Copyright violation can be avoided by obtaining permission in advance to use something and making payment for the use. अब ऑब्वियसली प्लेजरिज्म को हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं? प्लेजरिज्म को हम इस तरह अवॉइड कर सकते हैं कि हम जो है उसके जो जिस काम आप यूज कर रहे हो उसको प्रॉपरली जो है वो तरीके से साइट कर दें। और कॉपीराइट वायलेशन जो है ना वो उसको हम इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं कि हम जब भी अगर किसी का मटेरियल या कुछ यूज कर रहे हैं उसको आप प्रॉपरली उससे परमिशन लें और उसको कॉपीराइट की फी पे करें, जो भी होल्डर है उसने जो फी चार्ज करा है उसको पे करें और उसके मुताबिक जो है ना फिर उसको यूज करें। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कॉपीराइट और प्लेजरिज्म जो है ना इसमें डिफरेंस ये है। Now another important aspect is intellectual property rights. It's actually copyright and intellectual property right have a relationship, and they are actually related with each other, because intellectual property right is refers to creation of the mind, like those things which are being created by the minds of certain people, like they could call as inventions, literary artistic work and symbols, names and images used in commerce. So when we talk about industrial property rights, it includes patent for inventions, trademarks, industrial designs and geographical indications. Intellectual property rights are like any other property rights. They allow the creator or owner of a patent. A patent is actually rights which has been taken on a certain formula or certain other aspect which can result in creation of certain thing. Then a trademark is actually the rights taken on the sign of your company or brand, or copyright to benefit from his or her own work or investment. So it says force the right to benefit from the protection of moral and material interest resulting from authorship of any specific literary or artistic production. And the process and well-being of humanity rest on its capacity for new creation in the areas of technology and culture. So obviously it's very important that when a person has taken such a large effort, they have gone through certain R&D expenditure and all those things, and based upon that they have invented certain things or they have generated certain important designs. So it's very important that their efforts should be recognized, and they should be properly protected. So the legal protection of these new creation encourages the expenditure of additional resources which leads to further invention. Obviously when you are giving person credit and you are protecting them, so obviously they'll encourage and they'll be involved in a certain other innovative work. So it's very important that you should give properly intellectual property rights to the people who have done this. So the promotion and protection of intellectual right prospers economic growth, creates new jobs and industries, and enhances the quality and enjoyment of life. So obviously, when people are encouraged to for new creation, innovation, so that will help the growth of the economy, and they will be indulged in creating new things and creating new inventions for the development or for the enhancement of the quality of life of the people.
सो यहाँ पे देखें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना वो कॉपीराइट से एक साथ एसोसिएटेड ही है। यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हम की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर एसोसिएटेड है उन चीज़ों पे जो आपकी मतलब इजादात के साथ एसोसिएटेड होती हैं। मतलब जो आप नई चीज़ बनाते हैं जिसमें आपके इन्वेंशन भी आ सकते हैं, आपकी जो है ना वो लिटरेरी वर्क जैसे आर्टिस्टिक वर्क है, आप जो है वो कोई नई चीज़ बना रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें आप बना रहे हैं, या आप सिंबल्स हैं जो आपने यूज़ किए। जैसे अगर आप देखें तो एप्पल का जो है वो जो आईफोन है या यू है तो वो डिफरेंट सिंबल यूज़ करते हैं। आपके जो है वो पेप्सी कोई और सिंबल यूज़ करती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये इनके हैं, जैसे नेम है पेप्सी का नाम है, एप्पल का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनके नाम है और फिर ये लोग इनके ऊपर प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। नोकिया का नाम है। सो ये तमाम इमेजेस और ये चीज़ें जो है वो कॉमर्स में यूज़ होती हैं। सो इसके ऊपर जो है ना प्रोटेक्शन जो दी जाती है। सो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो होती है वो जो उसके राइट्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं पेटेंट्स फॉर इन्वेंशन। लाइक अगर आपने कोई इन्वेंशन की है, आपने नई दवाई कोई फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल्स में बना ली है, तो उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, तो वो पेटेंट्स आप उस पर ले लेते हैं। तो उससे ये होता है कि कुछ अर्सा 20 साल, मतलब स्पेसिफिकली अगर आप पेटेंट्स का देखें तो उसका टाइम पीरियड जो होता है वो 20 साल तक का होता है, कि आपने 20 साल तक आप पेटेंट अगर ले लो तो आपके अलावा और कोई चीज़ वो नहीं बना सकता। इसी तरह ट्रेडमार्क्स होता है, जो आप उसके ऊपर ट्रेडमार्क्स वगैरह के ऊपर राइट्स ले लेते हो कि जी ये और कोई ये ट्रेडमार्क नहीं यूज़ कर सकता। ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होते हैं, ये तमाम चीज़ें। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर आपके प्रोटेक्टेड हो जाती हैं, आप उसके ऊपर राइट्स ले लेते हो। सो उससे फिर कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो यूज़ करता है तो फिर ऑब्वियसली उसको जो है वो पेनल्टी होती है। सो असल में जो हम ये कहते हैं ना प्रॉपर्टी राइट्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हम यूज़ करते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो आपका क्रिएटर या जो ओनर होता है ना, उसको ये बेनिफिट होता है कि वो जो काम का बना रहा है वो ही बनाएगा, उसके अलावा और कोई भी नहीं बना सकता। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो क्योंकि वो एक ऐसे इनोवेटिव वर्क में है जिससे नई चीज़ें आ रही हैं, नया काम आ रहा है, और आपने उसके जो माइंड है उसको क्रेडिट दे दिया कि जो उसके माइंड से इतनी अच्छी अच्छी इन्वेंशन निकल रही हैं और आइडियाज़ निकल रहे हैं, नए नए डिज़ाइन निकल रहे हैं। तो वो अगर आप उसको क्रेडिट देते हैं और उसको उस पर कमर्शियल इंटरेस्ट में या उसको फाइनेंशियल बेनिफिट उस पर मिल जाता है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि फिर वो आगे और भी इनकरेज होता है और फिर वो और इन्वेंशन में आता है उसको। क्योंकि जब आप कोई भी इन्वेंशन करते हैं उसके ऊपर आपके अच्छे खासे एक्सपेंसेस, R&D के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर जो है वो अच्छा खासा होता है। तो अगर इसको आप सपोर्ट गवर्नमेंट के थ्रू या रूल्स के थ्रू दे देते हो तो उससे फ़ायदा ये होता है कि वो लोग अपने एडिशनल रिसोर्सेज को भी उस इन्वेंशन की तरफ ले जाते हैं, जिससे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ उसी वक्त होती है जब लोग नई नई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नए नए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, और जब वो प्रोड्यूस होती हैं तो ऑब्वियसली जो और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, और नई नई इंडस्ट्रीज जो होती हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इस तरीके से इम्प्रूव करते हैं कि जब ज़्यादा लोगों के पास जॉब होगी तो उनके पास ज़्यादा जो है वो पैसा उनके हाथ में आएगा, कंजम्पशन करने के लिए पैसा आएगा। जब वो कंजम्पशन करने के लिए पैसा आएगा तो ऑब्वियसली वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेंगे। वही पैसा अपनी एजुकेशन पे लगाएंगे, अपने घरों पे लगाएंगे, डेवलपमेंट में लगाएंगे, सेविंग्स करेंगे, जिससे आपके और मतलब ये एक मल्टीपल इफेक्ट होगा जो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी आपके वर्क ऑफ आर्ट है उसको जो है वो उसके थ्रू जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी जो है इसकी वायलेशन अगर होती है तो वो भी लीड करती है मुख्तलिफ पेनल्टीज़ के ऊपर।